Great. Welcome everyone to today's open discussion. Before we begin today's topic of discussion, which is the fear of getting hurt again in relationships, what these open discussions are about is that we have two-way communication. We keep these conversations, from both sides. So it's not that we are going to deliver anything to you as such. We are going to have an in-depth conversation on this particular topic, and you all are invited to chime in between. You can always raise your hand and share any experience story that you wish to share, or you can ask your question. So that's that. As you guys know, that today's topic is the fear of getting hurt again in relationships. So this can happen while you have, gotten over a painful experience in a relationship, which included a lot of toxicity or any kind of trauma or has created any kind of wounds, maybe was or was not abusive in nature. Um, or maybe it just didn't work out. Things, a lot of times we try a lot of things to make things work, all different, this and that things, but then at the end it doesn't just work out, right? And sometimes it also happens that when things do not work out, we don't even find a reason why it didn't work out, right? We don't get a proper reason from the other person, that in case they got angry, in case they got annoyed, in case they got frustrated from the relationship, suffocated, what was it, right? So we end up feeling, hanging somewhere in the air. We don't know the answers. Or maybe at times it also happens that you are in a relationship which is at the verge of breaking up, where you're still figuring out that, what would happen in my future relationship, and so on and so forth. So these are some of the scenarios where we have this fear inside us that, leaves us in this kind of mindset where we feel afraid that we may get hurt again in relationships. Hmm? So we are going to talk about that today. Any of these situations have you guys been into that I talked about? Feel this way, or you have felt this way in the past? Then feel free to share that with us. In case any of you feel that you have been through something like this and you have now gotten over it, you can share that as well. Maybe others will find your story inspirational or useful. Yes, Manjinder, you want to go ahead? Like uh, after doing everything in what was in my hand, and still I was not able to get what I was giving, like same in return, or you can say like still it was not enough for the person what I am doing for her. So I think this is what I felt. Mm-hmm. Right, right. And in like while going, so that relationship is over for you, right? It's been a year. It's over for you, right? And going forward, like moving ahead from that relationship, did you find it challenging? What kind of challenges did you come across? Like I can say like I'm not falling into the same pattern at the moment. Like challenges are that I'm still wondering that how from my side it is like I will say that it is maybe it is love for another person, but how if she felt again that I'm pleasing her, like to keep with me in any way, or that it makes me like sometime like afraid that how if I fall into the same patterns, like she will again recognize my you can say loopholes what I am trying to impress her or trying to like how I can say. So this only this is the thing I'm afraid of. Hmm. Right, right. And you're talking about like the same person or somebody else? Like somebody else.
somebody else. Like I'm Okay. seeing someone from like some few months. So I'm still thinking that I might fall into the same pattern, or she might took advantage of that one. But sometimes I am able to recognize that I am not supposed to do this, where I need to say no. I supposed to say no. I am saying I'm doing that, but still somewhere in my heart I have that fear, or I'm afraid that I might forget everything and I will start doing the same stuff for her as well. राइट राइट बट अभी तो आपको पता चल गया ना कि नो कैसे बोलना है, कैसे ये चीज नहीं होने देनी है. जी जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल. फिर अभी तो है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ओवरवेल्म्ड होने की वजह से ना, तो कुछ कुछ सर्टन थिंग्स जो इग्नोर हो जाती हैं, मैं अभी एक्सेप्ट करूंगा, कुछ सर्टन चीजें इग्नोर हो जाती हैं, लाइक सम टाइम. राइट राइट आई मीन अनकॉन्शियसली यू जस्ट एंड अप डूइंग इट एंड देन यू रियलाइज दैट अरे मुझे ये नहीं करना था. जी बिल्कुल बिल्कुल. ओके ओके राइट. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट Manjinder. And yes, that can happen to a lot of us when we have been on this journey after working on ourselves कि हमें ये realize होता है कि healthy boundaries कैसे set करनी है, कैसे वो same patterns नहीं repeat करने हैं, but then we end up doing it unconsciously and then we develop this fear. So this was a very good point, Manjinder. Anybody else who has been through a situation like this, what were your findings about yourself and the other person, new people that you're meeting? तो क्या क्वेश्चंस निकल के आते हैं, क्या फीलिंग्स आती हैं, क्या फियर्स आते हैं, व्हाट इमोशंस कम अप, व्हाट डू यू गाइस थिंक? I guess past trauma gets triggered somewhere, right? And अगर कोई भी छोटा सा भी इंसिडेंट हो, other person may be meaning well, but somewhere you'll get connected to your past on its own, and it's difficult to trust. Yeah. So you start projecting your previous past experiences onto new people as well. कि कहीं ये भी Exactly. ऐसे है तो नहीं कर देंगे. Exactly. Right. So projection is another thing. Thank you, Namita. Anybody else? Yes, Mohan. Okay. In my case, I have two kids. And before thinking about any relationship with anyone, the first question मेरे दिमाग में आता है कि how kid would gel. The other person might also have kids or might not, but will they accept the new person in their life or will they accept the new children in their life? So उस डर की वजह से I think मैं अपने बारे में तो अभी कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ. किड्स के बारे में ही मेरा जो है थॉट प्रोसेस वहीं पे आके एक ब्लॉक लग जाता है कि नहीं अभी इट्स नॉट द राइट टाइम. आई गेस दैट्स वेयर आई एम स्ट्रगलिंग. Okay. In your case, it's the kids where you feel, more unsafe. या Right. Cool. So what we will say, guys, कि बहुत बार ऐसा होता है, like Manjinder was sharing, Namita is sharing, so I'm pretty sure कि हम इस point पे भी पहुंच जाते हैं where we come to the awareness of this point. जैसे नमिता ने बहुत अच्छा point बोला, that we start projecting things on the other person, projecting the past on the new people that we meet in our lives. और मंजिंदर ने शेयर किया कि even if he has done all the work, कभी कभी हम इस pattern में fall back कर जाते हैं. So in today's conversation, we will see how we can tackle these issues and how we can go forward on this journey. So और भी है किसी को कुछ और शेयर करना है, that where exactly you feel the fear, क्या दिमाग में क्या thoughts आते हैं, what questions, what stops you, what makes you feel stuck? जैसे मोहित का सिनेरियो तो किड्स वाला है. How about others? Yes, Hardeep. Just to avoid that hurt again, you feel like do not give so much of energy and don't invest your feelings or emotions so much
again for some other person, because in the back of your mind it remains ki it can happen again. And of course that trust issues will start. You don't see the things again in the similar way. Hmm. Right, right. Where this fear of commitment develops कि in case मैंने फिर से invest कर दिया और फिर से अगर ये हो गया तो इससे better है just to save ourselves from the same scenario. हम ये कोशिश करते हैं कि हम पूरा invest ही नहीं करते हैं. We don't invest fully in the relationship. हम बहुत दूर दूर से बिल्कुल कबड्डी की लाइन के जैसे छू के आना चाहते हैं. But then again, it keeps us in, at distance, and we don't experience any intimacy with people. We don't get to develop that connection, belonging, which we are actually looking for. So ऐसा हो जाता है कि हम दोनों साइड से ही बैडमिंटन की तरह अपने आप को खेल रहे हैं कि अगर रिलेशनशिप में जाएंगे तो ये डर लग रहा है कि इसमें भी ये गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन नहीं जा रहे हैं तो ये डर लग रहा है. देन अगेन आई एम लेफ्ट अलोन एंड I don't have the love and intimacy. So हम बीच में kind of there's this battle which starts happening inside. Yes, exactly. Anything that you wish to add in this regard, Akarna? No, nothing that comes to my mind right now. There is one point I want to add, but I'll add it a little bit later. Let's hear from more people. This topic that is coming up, this thing that that it gets triggered and the repeating pattern. So yeah, I'll talk about it. पहले थोड़ा और सुनते हैं और लोगों से. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल. Lata, who else? Nirmal, Soni, Kavita, anything you guys would like to share? No, Anamika, nothing as of now. Just thinking. Okay. Yes, Mohit. Yeah. So I think few of you know that, but I'll repeat that again. Last month, I kind of discussed a few things with my ex, and for kids, there was a talk about keeping a good friendship, but we talked about 3 hours, and she showed some signs that she wants to come back as well. So I clearly asked her, are you willing to come back, or what you want in your what do you want? So she said, I'm not clear. Right? So उस टाइम पे जो मेरा ब्रेन था वो एकदम से ये ट्रिगर हुआ, what if she comes back? How will I trust her again? और उसको मतलब क्या वो ऐसा करेगी जिससे मेरे को वो ट्रस्ट दोबारा बिल्टअप होगा, और I will accept her. Will I be able to accept her the same way? और या मेरे दिमाग में वो सब शक सब आएगा. So उस टाइम पे भी आई थिंक I've blocked myself कि नहीं, दोबारा से ट्रस्ट करना, और वो एक जो फीलिंग है कि वो लेट्स से वही फ्रीडम तो ऑब्वियसली देनी पड़ेगी जो पहले थी. तो अगर वो जाती है कहीं पे और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि यार पता नहीं कहाँ है, वहीं तो नहीं है या क्या कर रही है, तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए उसी टाइम पे लाइक कुछ एक मिनट्स में मेरे दिमाग में ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि नो, अगर ये वापस आती है तो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग हर बैक. बट बच्चों के लिए फ्रेंडशिप ठीक है, आप दूसरे घर में रह लो, बच्चों से मिलना है, इट्स ओके, आई नेवर डिनाई दैट, एंड आई एक्चुअली वांट दैट कि बच्चों को एक्सेस मिले उनकी माँ का, और सो दैट दे कैन मेंटली थोड़ा स्टेबल रहे. बट मेरे दिमाग में वो ब्लॉक एकदम से आ गया था कि नहीं. तो ये भी तो फियर ही है एक तरह की, आगे जाके पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, ट्रस्ट दोबारा से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. जस्ट वांटेड टू शेयर दैट एज वेल. बिल्कुल बिल्कुल. This is a very common thing which people experience when they go through a betrayal or when they go through a heartbreak in relationship. And yeah, the first question that comes up is
कि अगर यही सेम पर्सन भी मेरी लाइफ में आ जाए तो whether we will be able to trust them or not, because हमें कैसे पता है कि वो ये चीज दोबारा नहीं करेंगे. So yeah, thank you for sharing that, Mohit. Yes, Natasha. I'm actually out in case there's too much disturbance, just let me know. So yeah, in my case, Not we are not able to hear you, Natasha. is it better now? Yes. Yeah. Okay, so I have a tendency to like once I'm done with a relationship, a couple of months pass and I'm fine, and then when I get into another relationship, um, I have these moments wherein I'm not able to move past certain situations, giving the impression to the other person that I'm not interested in them. And so these are the same pit stops. It's as if I'm carrying the trauma of the previous relationship into the new relationship. जबकि कहने के लिए I have given the sufficient time, after a breakup and all of that. But despite that, I experience these. And so इससे क्या होता है कि सामने वाले को गलत मैसेज चला जाता है. And usually it's in the initial stage, so ऐसा भी नहीं है कि they know you that well कि वो आपको उतना समझ लेंगे. They will accommodate what you're feeling. So, so yeah, this is a particular sort of, I don't know if it's a fear or some kind of mental block. And something can be done It's about. it is still insecure attachment style only. So you remember the three types of insecure attachment styles, no? Yes, I'm anxious, preoccupied. So this is still that. So even in case of Mohit and Manjinder, when you guys were talking, so I said that I'll talk about it. So so when we are afraid of same thing happening again, अब यहाँ पे हमको इसको थोड़ा सा ब्रेक करके we need to look at the situation in this way. कि let's say for example something happened to you first time, तब तक आप you were not aware of your insecure attachment style कि what you operate from. तो आपको इन सब चीजों की कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है दुनिया में. तो you went through all these incidents and all that. तो अब यहाँ पे अभी भी आपके अंदर वो इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है, तो ऑब्वियसली आपके जो रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज आएंगे वो वहीं से ही आएंगे. ये डर लगा रहेगा कि ऐसा दोबारा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. that will be there. फिर you became aware of this. अब आपको पता लग गया कि you operate from anxious, preoccupied or fearful, avoidant. फिर भी क्वेश्चंस वहीं से आ रहे. तो this shows a strong hold of the habit कि वो आदत ने ना पकड़ा हुआ है आपको. तो क्या था कि पहले जब आप गड्ढे में गिरे थे तो आपको उस गड्ढे से बाहर निकलना आता नहीं था, आपको पता नहीं था. पहली बार तो शायद यही नहीं पता था कि गड्ढे में हूं. ऐसे लगा कि ये तो नेचुरल है, ये तो ऐसे ही होता है, बाकी भी आसपास के लोग भी उस गड्ढे में ही हैं या उसी टाइप के गड्ढे में हैं और वो सब बोलते हैं ये तो ऐसे ही होता है. तो जब हमारे साथ ये सब चीजें पहली बार होती हैं, पहले होती हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि हम गड्ढे में हैं. फिर हमें कुछ अवेयरनेस आती है, हमें गड्ढे से बाहर निकलना आ जाता है, हमें पता चल जाता है कि इसका ये सॉल्यूशन है, ऐसे बाहर निकला जाता है, ये किया जाता है. ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा वो पता चल गया. अभी भी वो डर है कि ये फिर से हो जाएगा तो क्या. अब सी, लाइफ में किसी चीज की कोई गारंटी तो होती नहीं है. यू ट्राई टू इडियट प्रूफ अ सिस्टम, नेचर विल प्रोवाइड यू विद अ बेटर इडियट. तो लाइफ में तो लोग आएंगे ही आपको टेस्ट करने के लिए, आपको पुश करने के लिए, ये सब करने के लिए. वो तो इम्पॉसिबल है. आई मीन इट्स लाइक वायरसेस. हम वायरसेस को थोड़ी किल करते हैं, हम तो वायरसेस के लिए दवाई ही या अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर ही काम करते हैं ना. तो ऐसा कौन सा, मतलब लाइक मेडिकल साइंस में आपको क्या ऐसा कहाँ पता है कि somebody is trying to work on killing the viruses ताकि कोई बीमार ही ना पड़े.
तो ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि दिस इज एन इम्पॉसिबिलिटी. सो नेचर विल कंटिन्यू टू म्यूटेट वायरसेस. हम तो उससे फाइट करने के केपेबल ही बन सकते हैं, right? तो जब इंसान स्टोन एज में था, जब उसके पास फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं थी, तब वो डरता था इन सब चीजों से, कि उसको तो एक खांसी भी हो जाएगी तो दैट कुड इटसेल्फ बी लाइफ थ्रेटनिंग, बुखार भी हो गया तो इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग एंड ऑल दैट. फिर जब हमको दवाई मिल जाती है, तो दवाई मिलने का मतलब या इलाज ले लेने का मतलब ये नहीं होता है कि वी विल नॉट फॉल इन द सेम डिच अगेन. ऑल दैट मीन्स इज नाउ यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट आउट ऑफ देयर. तो अभी भी डर किस बात का? गिरने का अगर डर है, तो गिरने का डर तो कभी खोया ही नहीं जा सकता है. ये तो इम्पॉसिबिलिटी है कि मैं गिरूं ना. वो तो आइडियल सिचुएशन है कि हम ये बोलें कि कोई बीमार ही ना पड़े. दवाई क्यों लेनी है, इलाज क्यों करना है? इट इज सो अनकंफर्टेबल, इट इज सो इनकन्वीनियंट एंड ऑल दैट. बेस्ट तो यही होगा कि हम बीमार ही ना पड़े. तो उसकी तो श्योर शॉट गारंटी तभी है कि हम वायरसेस को ही खत्म कर दें. क्योंकि आप अपने इम्यून सिस्टम को कितना भी अच्छा कर लो, कितनी भी अच्छी डाइट ले लो, कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज कर लो, ये कोई गारंटी है ही नहीं कि देयर विल नॉट बी एनी वायरस दैट विल नॉट अटैक यू. तो अगर आपको उसकी फुल श्योर शॉट गारंटी चाहिए, तो फिर तो सारे वायरसेस को मार दो. देन और वो भी हमें मालूम नहीं है कि अगर हमने सारे वायरसेस को मार दिया तो वो व्हाट दैट एनवायरनमेंट विल लुक लाइक एंड वेदर वी विल एक्चुअली बी एबल टू सर्वाइव इन इट और नॉट. बट अभी हमारी स्मार्टनेस हमको ये बताती है कि अगर हम सारे वायरसेस को मार दें तो फिर हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, जड़ ही खत्म कर देते. लेकिन वो खत्म करने का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा वो हमें नहीं पता है, क्योंकि वी नेवर गॉट टू दैट पॉइंट. सो अगर आपको डर ही खत्म करना है पूरा, तो फिर तो ये दुनिया में सारे लोग ही खत्म हो जाएंगे. यू विल बी द ओनली पर्सन लेफ्ट एंड यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन. But we don't know if you will be the only person alive, you will actually be the happiest person or not. So point I'm trying to make is कि लोग तो रहेंगे ही, और वो तो ट्रिगर करेंगे ही, और वो तो आएंगे ही आपके ट्रस्ट को टेस्ट करने के लिए, आपके पेशेंस को टेस्ट करने के लिए, टॉलरेंस को टेस्ट करने के लिए. लेकिन डर किस बात से रहे हो? गिरने से डर रहे हो? ध्यान इस चीज पे लाना है कि मैं डर किस बात से रहा हूं. क्या मैं गिरने से डर रहा हूं, या और अगर मैं गिरने से डर रहा हूं तो क्यों? क्योंकि मुझे बाहर निकलना नहीं आता है. अगर आप गिरने से डर रहे हो इस वजह से कि आपको गड्ढे से बाहर निकलना नहीं आता है, देन आई अंडरस्टैंड. तो देन यू हैव टू लर्न हाउ टू कम आउट ऑफ दैट होल. क्योंकि गिरना तो पड़ेगा ही, गिरना तो है ही. हम जब तक हम जिंदा हैं तब तक सिचुएशंस तो आएंगी, एंड वी विल बी टेस्टेड फॉर दैट. तो ये तो इम्पॉसिबिलिटी है कि हम इस चीज पे ध्यान दें कि कैसे मैं ना गिरूं, कैसे आई फाइंड समबडी हु आई कैन कंप्लीटली ट्रस्ट, हु विल नॉट ब्रेक माय ट्रस्ट, हु विल डू दिस, हु विल डू दैट. इम्पॉसिबिलिटी है. मतलब नॉनसेंसिकल क्वेश्चंस हैं, टू बी ऑनेस्ट. ये इस पे एनर्जी लगाना ही बेकार है. आई स्ट्रांगली बिलीव कि देयर आर स्टूपिड क्वेश्चंस इन लाइफ एंड दीज आर दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. क्योंकि इसमें एनर्जी लगाना ही बेकार है. बेटर एनर्जी लगाने के क्वेश्चंस रहेंगे कि अगर मैं गिर जाऊं तो क्या मुझे बाहर निकलना आता है. अगर आपका आंसर आता है नहीं, मुझे नहीं आता है बाहर निकलना, इसीलिए मैं डर रहा हूं गिरने से, देन दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू एक्वायर द स्किल्स फॉर दैट. और अगर ये आता है कि हाँ अभी मैंने सीख लिया है, अभी हम ट्राई तो करेंगे कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में ना गिरे और ये सब ना हो, अभी हमने इतना तो सीख लिया है, अभी इतना तो पता चल गया है, देन आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. बट अगर मैं पढ़ भी जाऊंगा तो आई नो कि अब मैं अटकूंगा नहीं. पहले तो मैं अटक गया था अपनी इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल से, मैं नो नहीं बोल पा रहा था, मैं अटक गया था. अब इतना तो पता है कि अब मैं अटकूंगा नहीं. अब कोई मुझे उस लेवल का बेवकूफ तो नहीं बना सकता कि मैं अटक जाऊं. तो अटकूंगा नहीं, इतना अगर कॉन्फिडेंस है तो इतने तक ही पहुंच सकते हो. that's as far as you can go. कि I'm good now, I can handle this. Before you were not able to handle this, इसीलिए इतना ज्यादा रायता फैला, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ. लेकिन अब पुरानी बातों को वापस से नए वर्जन पे कंपेयर करना विल बी अनफेयर.
what your old version experienced and what you have become as a new version, now comparing that will not be fair, because what your old version didn't know how to handle, your new version knows how to handle. And same people, similar people, even worse people might come in your life, but you need to have the answer. Am I capable of handling it? Not that how should I avoid it, how should I make sure this doesn't happen, how should I make sure I get the guarantee कि ये मेरे साथ ना हो. All nonsensical questions. कोई आंसर ही नहीं है इसका, कोई दे ही नहीं सकता है. आप नहीं दे सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर. फॉरगेट अबाउट एनीबडी एल्स. आप खुद के लिए नहीं दे सकते हो इन क्वेश्चंस का आंसर. अगर आपके बच्चे आपसे ये क्वेश्चन पूछे और आपसे ये गारंटी मांगे, आप नहीं दे सकते उनको ये गारंटी. और अगर आपको ये लग रहा है कि आपको ये गारंटी देने के ऊपर काम करना चाहिए, तो इसी को ही हम एक परफेक्शनिस्ट बिहेवियर बोलते हैं. एमिंग फॉर द इम्पॉसिबल एंड गेटिंग स्ट्रेस्ड एंड वरीड अबाउट दैट इम्पॉसिबल टारगेट. तो लाइफ में कुछ कुछ बैटल्स होते हैं जो हमें जानने होते हैं कि वो लड़ने ही नहीं है. नॉनसेंसिकल बैटल्स हैं, उसमें घुसना ही नहीं है. देयर आर स्टूपिड क्वेश्चंस इन लाइफ एंड वी शुड ऑल बी अवेयर ऑफ देम. सो ऐसा बोला जाता है ना, नो क्वेश्चंस आर स्टूपिड, बट गलत है वो. क्योंकि इसमें हम अपनी इतनी एनर्जी लगाते हैं ना इन क्वेश्चंस के आंसर के पीछे भागने में, जो जरूरत ही नहीं है. आपको इस चीज के पीछे भागना है कि अगर मैं गिर पड़ा, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया, तो क्या अब मेरे में कैपेबिलिटी है कि मैं इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकूं, और क्या मेरे में अब कैपेबिलिटी है कि मैं इस चीज से बाहर निकल सकूं, क्या मेरे में अब वो कैपेबिलिटी है कि मैं इसमें अटकूं नहीं. तो अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आपके पास पॉजिटिव में आ रहे हैं कि यस यस यस, तो बस उतना ही है. उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देयर इज नो, यही गारंटी है फिर. इज दिस मेकिंग सेंस गाइस? एक पॉइंट मुझे इसमें और आ रहा था करना, so I'll just add it quickly कि I guess a lot of you have already, at least discussed a little bit about law of attraction with us, or maybe you have heard it from somewhere else. And जिनको नहीं पता है उनके लिए it's a simple concept, it's a simple metaphysical law which says like attracts like, right? So everything outside your reality is a mirror of what is happening inside of you, right? So जैसे आप who you are is what you're attracting outside. अभी ऐसे होता है कि इट्स लाइफ इज सो काउंटर इंट्यूटिव इन नेचर कि जिस दिन आप इस करेज और कॉन्फिडेंस में आ गए कि अब तो ले आओ जो लेके आना है, मैंने सब हैंडल कर लेना है, ठीक है, अभी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम करेजियस इनफ, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, आई एम ब्रेव इनफ, आई एम एम्पावर्ड इनफ, उस दिन ये टाइम होगा जब ये सारी चीजें होनी बंद हो जाएंगी. क्योंकि फिर इन सारी चीजों का फिर ये सच मायने में आप उस चीज को ट्रांसेंड कर गए हो, आप उस चीज से इवॉल्व कर गए हो. क्योंकि अब आपके अंदर वो फियर नहीं रह गया है कि फिर से हो गया तो, फिर से हो गया तो. तो उस टाइम पे जब हम सब उस फेज में पहुंच जाते हैं, जब व्हेन वी से दिस थिंग कि द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ द फियर इज टू गो इन फ्रंट ऑफ द फियर एंड पैस थ्रू इट. और इसका मतलब ये नहीं है कि पीपल हु आर करेजियस दे डोंट फियर. We all fear. The only difference between courage and not having courage is that you feel the fear. When you're courageous enough, you still go ahead and take the chance. You still do it, whatever you're fearful about. एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा कि उस दिन आपको ये वाली जो एक सेइंग है ना, जो सबने ऑलमोस्ट एवरीबडी वुड हैव हर्ड इट बट एक्चुअली में क्लिक करेगी, कि पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल. दैट डे उसका रियल मीनिंग समझ में आ जाएगा. पेन को अवॉइड नहीं कर सकते, पेनफुल सिचुएशंस आएंगी, पेनफुल लोग आएंगे, बट हमारी सफरिंग होती है हमारे खुद के इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स या हमारे खुद की
inabilities to set healthy boundaries, to say no जहाँ पे हमें no बोलना है, to say yes जहाँ पे हमें yes बोलना है, to be people pleasers, to be all these things. ये जो हमारे खुद की inabilities हैं, जिनकी वजह से हम वो नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए, इसकी वजह से सफरिंग क्रिएट होती है. वो करना आ जाएगा तो सफरिंग विल बिकम ऑप्शनल. पेन तो इनएविटेबल है, पेन तो आएगा लाइफ में, पर अब आपको उसको सफर करना है या नहीं करना है वो आपको समझ में आ जाएगा कि नाउ सफरिंग हैज बिकम ऑप्शनल. पेन तो है. पीपल विल कम, दे विल ब्रेक योर ट्रस्ट, दे विल इंसल्ट यू. पेनफुल होगी सिचुएशन, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गुस्सा नहीं आएगा, पेनफुल नहीं होगा एंड ऑल दैट. ट्रिगर नहीं होगा, सफरिंग नहीं होगी उसमें. बिल्कुल बिल्कुल. और द रीजन व्हाई आई एम शेयरिंग दिस, क्योंकि ये दो डिफरेंट एंगल्स हैं फ्रॉम विच वी आर लुकिंग एट द सिचुएशन. वन इज द एंगल वेयर वी टॉक अबाउट healing, going on a healing journey. Another is the angle where we talk about law of attraction, manifestation. ये अलग अलग नजर आ सकता है, बट ये अलग अलग है नहीं. ये दोनों चीजें बिल्कुल साथ साथ चलती हैं. सिंपल सा मतलब इतना ही है that let's suppose somebody has done the healing work. Let's suppose somebody has worked on manifestation, metaphysical laws, law of attraction, whatever we call them. ठीक है, तो किसी भी टाइप का काम हमने किया है. अभी कैसा होता है कि जब हम ये कर लेते हैं, उसके बाद हम जैसे ही हमारी लाइफ में ये सिचुएशन आती है और हम फिर उस मोड में आ जाते हैं कि अरे मेरी हीलिंग जर्नी का काम नहीं हुआ, अरे मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम नहीं हुआ, अरे मेरे इसका काम नहीं हुआ, उसका काम नहीं हुआ, किसी का भी काम नहीं हुआ. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका वो काम पहले से ही नहीं हुआ था. इट वॉज जस्ट दैट वी वर टेलिंग आवरसेल्व्स दैट द हीलिंग इज ओवर, दैट द application of law of attraction is over and all that. Those are the stories we are telling ourselves, or maybe not the stories we are telling ourselves, but the life has brought to you the evidence to show you कि अभी थोड़ा कहीं पे कुछ काम है जो रह गया है. कोई तो जगह है जहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस नहीं आई है, जहाँ पे जिसको देखना और ज्यादा काम करना बचा हुआ है. राइट. सो द सेंटेंस इटसेल्फ, व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल से कि मैंने ये कर लिया फिर भी ऐसा हो रहा है, then it brings us back to what Akarma was saying कि when you reach that space जहाँ पे you feel कि अभी आ जाने दो, वहां पे ना ये क्वेश्चंस ही आने खत्म हो जाते हैं कि अगर ये हो गया तो वो हो गया, तो ऐसा फिर से हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया. क्योंकि आपको पता है, I mean of course we all have a tendency as human beings to avoid pain, और ये है, बट द डिफरेंस बिटवीन हैविंग एन इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल एंड अ सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, कि जब हम सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में होते हैं तो हम उससे डीमोटिवेट होके बैठ नहीं जाएंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि जब ऐसा कुछ होगा तो हमें हर्ट नहीं होगा, पेन नहीं होगा, बट देन वी वुड नो दैट वी कैन प्रोसेस दिस पेन, हैंडल दिस पेन, एंड सी कि इससे जो मुझे सीखना था मैंने सीख लेना है, एंड देन आई मूव फॉरवर्ड. So that's how a secure person handles it. So, yeah, that's what I wanted to add, Akarma. Okay, ठीक है. Natasha, your hand was up some time back. Anything you wish to say? Okay, Natasha dropped out. Whatever we talked about, guys, does it make any sense to all of you? Yes, Lata. Yeah, Namika. Yeah, I totally can relate with whatever karma and you mentioned. In fact, I was at the same place where I, was thinking that patterns will repeat. But then when I improved on myself, because when I realized that there is some toxicity in me as well, in the relationship that I need to, look into and improve myself. How I look into the things instead of just looking into the negatives, I started just focusing on the positives of the person, that this is why I, moved ahead with the relationship, and this is why I need to be there. I kept on focusing on that, and I worked on my trigger points, why I am getting triggered with all those things. So after that, I am at much better place. I have I'm not sure if you remember, but yeah, I have been connecting, lately. But
earlier last year, we were discussing about our relationship. My husband and myself both had connected with you and a karma. So when I listened to that recording, we did not go with the further this thing, but yeah, when we had a discussion with you and a karma, and I went through complete recording. So I understood that there are gaps. There is love is there. If love is there, then there is a scope to work on the relationship, and we can definitely, if some behavioral issues are there, toxicity is there, any insecurities are there, that needs to be worked on if love is there. Should not give up and try to work on it. Uh, yeah. So I totally get it. If we work on ourselves, improve on ourselves, we can better handle the situation. If the same situation happens, it will not trigger us. Earlier it was triggering, but if it happens again, we will be able to handle it or not get impacted, or we accept that as it is. ओके ठीक है, ये बंदा तो ऐसा ही है, बट हाँ, वी आर इन द रिलेशनशिप फॉर बेटर थिंग्स. सिबलिंग्स में भी होती हैं, राइट? पेरेंट्स में भी होती हैं, बट वी आर देयर फॉर हायर रीजंस. Instead of just thinking about changing the other person, if we just focus on the good things and try to make, instead of, there will be toxicity for sure, but if we try to keep the focus only on the positive and try to make the relationship beautiful. I know it takes two hands to, clap, but if we, if we just keep on putting, uh, good efforts, I think the day will come and the other person will also see, or just keep on realizing, see, I'm putting efforts, I want it to happen in a good way. Other person will also realize eventually, and things might get better soon. It has worked for me, Yeah, so I can totally relate to it. ग्रेट ग्रेट वंडरफुल, दैट्स वेरी वेल सेड. और आपकी बात सुन के एक बात मेरे को और आई याद इसमें ऐड करने के लिए, कि many a times when people are talking about handling triggers and all that, they're often talking about the same person who has been causing this trigger. So obviously there are हीलिंग जर्नी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं. आई थिंक ये पॉइंट नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशंस में या कहीं ना कहीं हम दूसरा एस्पेक्ट भूल जाते हैं, कि आपकी लाइफ में कोई आया है जिसने आपको इस पॉइंट पे पहुंचाया है जहां पे आपको हीलिंग करने की जरूरत पड़ रही है, तो वो रीजन है, ठीक है. पर हम इस चीज में कर जाते हैं कि पर वो तो नहीं कर रहे काम, वो तो अपने ऊपर, वो तो वैसे ही है. तो ये ऐसा हो जाता है ना कि जैसे बॉक्सिंग रिंग में दो लोग हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, आपको भी चोट लगी हुई है, खून निकल रहा है, दूसरे को भी चोट लगी है, खून निकल रहा है, लेकिन आप इलाज कराने नहीं जा रहे ये बोल के कि पर दूसरा भी तो नहीं जा रहा, मैं क्यों जाऊं. तो दैट्स लाइक, ऑब्वियसली ये एग्जाम्पल सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि दिस इज क्वाइट अ स्टूपिड थिंग, बट इमोशनल वुंड्स में तो हम यही करते हैं. तो मैं नहीं, अगर वो नहीं कर रहे तो हम, मेरे काम करने से क्या होगा, दूसरा तो चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, दूसरा चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इस काम के पीछे दो एस्पेक्ट्स हैं. एक ये कि इस इंसान ने आपको कुछ दिखाया है जो आपके अंदर कमी थी, जिसकी वजह से यू गॉट ट्रिगर्ड एंड जिसकी वजह से यू गॉट वुंडेड. आपने जब उसके ऊपर काम किया तो यू आर फ्यूचर प्रूफिंग योर सेल्फ फॉर अदर्स एज वेल. तो ये एक एस्पेक्ट है जो बहुत समझ के चलना है, कि ये काम आप आगे के लिए भी कर रहे हो, ताकि कोई इसी टाइप का इंसान आके आपको फिर से वुंडेड ना कर दे. तो ये तो जो है वो है, ये अगर ये इंसान अपने ऊपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके ऊपर आपको कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपने ऊपर तो है. अपने आप को तो बचा सकते हो. नेक्स्ट उस टाइप का कोई और आके या उससे भी कोई और बुरा आके अगर आपको वुंडेड कर रहा है, तो इस इंसान ने आपको ये तो दिखा दिया है कि ये तो है आपके अंदर, ये ट्रिगर पॉइंट तो है, इसके ऊपर तो काम करने की जरूरत है. तो जो सेकंड एस्पेक्ट है इज अबाउट फ्यूचर प्रूफिंग योर सेल्फ फॉर अदर्स, दैट इज ऑल्सो देयर. Yeah, Karma. In fact, I'll tell you one of the example. See, my husband, he gets up very late, even अगर मुझे कहीं बाहर भी जाना है, तो it triggers me. It used to trigger me a lot. But then when I,
instead of looking as is, कि परेशान करने के हिसाब से कर रहे हैं, when I changed my view of looking as empathy, when I brought empathy कि यार because he is getting late sleep, he is awake till 4 a.m. 3 a.m. he is having all those sleep issues, insomnia hai, he is already struggling with it. So when empathy comes now and we understand why that person is doing that, what is making them do those negative things which we think they are doing purposely. It can happen purposely as well, but if we really dig down that why this person has done this or doing it, and with empathy, I think that makes us a better person and the relationship can improve as well. Absolutely. Absolutely. And empathy cannot be faked. एम्पथी का यही एक एस्पेक्ट है, इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस में जो 5 कंपोनेंट्स हैं उसमें सिंपैथी नहीं एम्पथी को रखा गया है, क्योंकि सिंपैथी कैन बी फेक्ड, सिंपैथी कैन बी क्रिएटेड. आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई लाइफ एक्सपीरियंस हो उस चीज का दूसरे के साथ सिंपैथाइज करने के लिए. आप इमेजिन कर सकते हो, तो इमेजिनेशन इज रिक्वायर्ड टू सिंपैथाइज विद एनीबॉडी, बट टू एम्पैथाइज विद समवन only and only experience is required. Empathy को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते अपने माइंड में. इट्स नॉट अ लॉजिकल थिंग दैट यू कैन से. सो एक बेगर है स्ट्रीट पे, आप उसके साथ सिंपथाइज कर सकते हो, बट इफ यू हैव नेवर बीन अ बेगर, इफ यू हैव नेवर बीन ऑन स्ट्रीट, आप एम्पथाइज नहीं कर पाओगे कि उसकी लाइफ में एक्चुअली में क्या चल रहा है. आप उसको देख के सिंपथाइज कर पाओगे एक लॉजिकल थिंकिंग क्रिएट करके कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन उसमें अभी भी उस लेवल का इमोशनल चार्ज नहीं है, क्योंकि आपको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज का. दिस इज व्हाई सिंपथी डजंट क्रिएट इमोशनल इंटेलिजेंस, ओनली एम्पथी कैन क्रिएट इमोशनल इंटेलिजेंस. सो वेरी critical and crucial element of emotional intelligence, this empathy. Yes, Malini, your hand is up. Yeah, I wanted to add on to this that sometimes, I mean, not related to the example that she picked up, but sometimes when it comes to overlooking the red flags of someone, we do create our own reasons and we also label them as sympathy or empathy. So it is very important to check where are you coming from and have you ever reasoned with yourself just to be with someone? Whether they are your folks, they are your family, your friends, you may be your ex, anywhere in your life, if you have done that, then you got to work upon it. Because in relationship, this happens a lot that we actually ignore the red flags in the name of empathy or that we are in alliance of it or any XYZ spiritual reason wherein we hold the greater position of acceptance and we always feel that by accepting this we are creating space for that other person to change, but are they actually choosing it too? Hmm. Hmm. And true acceptance would be when there is no need for anyone to change. That would be the true acceptance. तो अगर हम एक्सेप्टेंस भी सिर्फ इसी के लिए ला रहे हैं ताकि हमारे को उसको मैनेज करने के लिए एक टूल मिल गया है कि ठीक है, आई एक्सेप्ट until that person changes or I am giving them space to change, I'm being patient, I'm being tolerant and all that, ये ख्याल भी आ रहे हैं तो ये भी एक दिन फटेंगे ही, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस है ही नहीं. वो सिर्फ एक मैनेजमेंट टेक्निक है that we tell ourselves in order to create some level of patience or tolerance till the other person is ready to do it or not ready to do it. But true acceptance is कि यहाँ कुछ change के लिए है ही नहीं. Whatever is fine already. कुछ भी नहीं है. Okay. Yeah, Anamika, over to you.
So whatever we have talked about till now, guys, how are you able to link it to your situation, or is it relevant for you? Is it making sense? Or in case it's not, then also you can, share with us. ठीक है. और मुझे ऐड करने के लिए तो कुछ भी नहीं है. Anything in particular if you guys wish to discuss? Or Akarma, in case anything you wish to say more, then you can. Nothing that comes to my mind. ठीक है. Anamika, I would request if we can get a recording of this particular call because I found it very relatable and profound. Yes, Namita. So you can find the recording of this call on our YouTube channel, or if you're there on the app now. So Okay. when you click on the top left side, there are three lines. You click on that, and inside that you will see a section which is called free resources, and you will find it all the recordings of around 150 plus calls like these only over there. So that is put for all of you guys, whichever topic that you feel you resonate with. उसमें सारे sections बने हुए हैं of healing, of relationships, ऐसे different sections हैं, so you can find it from there. Right. It's under the free resources. It's named as open discussions, so you can find it over there. Thank you so much. Sure. Thank you, Namita. Namika, one question. Yes, Lavanya. Mm-hmm. Suppose one is trapped, if with the person, and if either with the same person or is suppose one of the scenario, if I just put it, the person has gone through a bad relationship or a divorce and is having now fears to step into another one, right? To start fresh again. So what are the things that one should take care of? Whether I understand that you talked about uh, you know improving in ourselves, empowering, so that we handle that situation in much better way and working on ourselves. But is there any other way? I think can setting boundaries or giving time and then working on or checking the red flags, or do we again look for the same flags in this maybe in another person, or look with the same glasses that we had worn earlier with the wounded ones, because I think it keeps on repeating. If it is repeating, that means it has we have not worked on it and things will keep on repeating. Right. Right. So, like Malini was sharing this one thing कि a lot of times कभी कभी हमने ऐसा भी चश्मा पहना होता है where we have got a belief system, let's suppose कि किसी को ये सिखाया गया है that be compassionate, जैसे आपने empathy वाला point बोला था, है ना? और वो बहुत अच्छी चीज है, बहुत it's a good thing to practice having empathy for people. ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है that if that thing is coming from a wounded state, तो हम जिन चीजों में जहां पे हमें फुट डाउन करना था, जहां पे हमें एक्सप्रेस करना था, वहां पे भी हम उन चीजों को नहीं कर पाते हैं, राइट? सो नाउ द थिंग इज कि सबसे पहला स्टेप है इज टू बिकम अवेयर, इज टू सी कि हमने ये जो भी चश्मा हमने पहना हुआ है, वट एवर कलर इट इज ऑफ, इट इज ग्रीन, इट इज रेड, इट इज ब्लू, what is it made up of? So first we need to become aware that what are the conditionings, belief systems, patterns, all of these things that we have picked up in our lives, which you already know, right? So जैसे जैसे हम ये चीज करने लग जाते हैं, along with that एक basic level of understanding, एक basic level of this observation skills that we need to develop, where we are able to see things as they are. So जहाँ पे वो red flag है, we become capable enough to observe and acknowledge that it is a red flag. और जहाँ पे green flag है, we are able to acknowledge and observe, and we are capable enough to see that it is a green flag, and react accordingly, situation to situation. So we become capable enough to do that. When we come to this place, हम when we come to a secure attachment style, ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, कभी हमें इस टाइप के लोग नहीं आएंगे, इश्यूज नहीं होंगे एंड ऑल दैट, वो सब तो होता रहेगा. बट द होल पॉइंट ऑफ बिकमिंग
a secure attachment style person is that we don't keep falling in the same old traps. And in case we are falling in a new trap, so koi baat nahi, it was a new trap, you were not aware of it, but now you are. So you just go dig deeper and see, okay, why did I fall in this trap? And how did this happen? What made me reach this point? And then you again go on a healing journey, work on it, and then move forward in life accordingly. But basic level pe now, going forward, once you have reached this place, then you can see these situations as an adult. But अभी क्या होता है कि जब हम एक wounded space से operate कर रहे होते हैं, so जब भी कोई sadness, worry, depression, anxiety, triggers और ये सारी चीजें जब surface में आ जाती हैं, uncomfortable, all the things that come up on the surface, it's not the adult which is feeling all of these things. It's the wounded child inside you feeling all of these things. और ये चीज देखने के लिए एंड इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जब हम वी कम टू आवर एम्पावर्ड स्टेट ऑफ एन एडल्ट हमें ये सब हर्ट और पेन और ये सब नहीं होगा. बट देन उसके साथ साथ एक और चीज होगी दैट यू नो दैट यू आर केपेबल इनफ टू हैंडल इट, टू पास थ्रू इट, टू प्रोसेस इट, टू आप उसको पकड़ के होल्ड ऑन करके नहीं बैठ जाओगे इन द सेम पैटर्न, राइट? सो जब हम उस ट्रिगर का मतलब ही ये होता है दैट यू हैव नाउ कनेक्टेड योर प्रेजेंट टू योर पास्ट. अब कहीं ना कहीं जैसे ही वो प्रेजेंट में वो चीज हुई, उसमें पास्ट का रिफ्लेक्शन आने लग गया, राइट? प्रोजेक्शन होना चालू हो गया. सो यू कम टू अ पॉइंट वेयर जहां पे ये प्रोजेक्शन रुक जाना चाहिए. In the present, there will be all sorts of things which will be coming up, but they come and they go. Happiness, or I should say, the happiness that we experience through transactions in life, वो आते जाते रहेगा. Sadness will come and go, सब कुछ come and go, and you see all of these things as a learning experience, evolutionary experience of life, and you continue to move forward, coming closer to a more empowered state, a more what should I say, secure state and all that. So ये journey तो चलती रहेगी, but we can at least come to a point जहाँ पे हम ये जो projection है of the चश्मा, of the glasses that we are wearing, ये चीज बंद हो जाए, right? So that's the journey of moving from insecure to secure attachment style, or we can say it, that's the journey about healing yourself. So a lot of times people say कि healing तो lifelong journey होता है, but then how are you guys talking about this particular thing कि healing is a healing can be done in a specific amount of time with the right guidance. So we very confidently say this thing. तो ये ऐसा होता है कि of course healing is a lifelong thing because evolution is a lifelong thing. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो चीजें हमें आज दिख रही हैं उनको हम रिजॉल्व ना करें. So जो आज अभी तक की जो चीजें लाइफ में हुई हैं वो they are the reflection of what we are inside, right? तो उन चीजों को तो रिजॉल्व किया जा सकता है ना, उन पैटर्न्स पे तो वर्क किया जा सकता है. एंड वंस यू लर्न, let's suppose you have identified 5 such patterns. Once you have worked on those, you also come to a point where you realize कि जब छठा आएगा तो आप उससे कैसे डील कर लोगे? आप खुद ही डील कर लोगे. You will already reach a point after dealing with 5 of these major ones कि बाकी सब आपको लगेगा कि हाँ ये वाला तो मैं भी कर लूंगी handle it. This phase, I know these are the steps, these are the things, and I handle it. So yeah, that's that. Does that answer your question? Yeah, Namita. Okay. Thank you so much, Lata, for asking it. Thanks, guys. Thank you. Okay. We'll see you guys in the next open discussion then. Thank you so much for joining, everyone. It was a wonderful conversation. Thank you for this great Okay. topic. Thank you for the guidance. Thank you. Thank you. Take care. Bye-bye. Namita. Bye.